Here we are with the Module 1 of the Chapter 3, that is Current Electricity. आज हम हैं Module 1 of Chapter 3 के साथ, that is Current Electricity. So, let's begin this module. And first of all, we have electric current. Electric current क्या होता है? We will discuss here. Okay, watch here. यहाँ पर हमारे पास ये एक कंडक्टर है, okay, और इसको हमने कनेक्ट किया है एक एक्सटर्नल सेल या फिर बैटरी से, ओके। ए को कनेक्ट किया है पॉजिटिव से और बी को कनेक्ट किया है नेगेटिव से। इसकी वजह से क्या हुआ, इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लगे फ्रॉम हियर टू देयर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ओके। एंड द फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन करंट, ओके। एंड the opposite of this electron flow is considered to be flow of the conventional current. Alright, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव, और इस फ्लो के अपोजिट को ही कंसीडर करते हैं द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट, ओके। रियलिटी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव, ओके। और इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट को ही कहते हैं the flow of conventional current. Okay, so whenever the charge flows from one point to another in a conductor, it takes some time. इस कंडक्टर के अंदर जब चार्जेस फ्लो करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, ओके, इट टेक्स सम टाइम। सपोज यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मीन्स द चार्ज that is flowing will be q is equal to ne. n number of electrons are flowing means the charge is q is equal to ne, and it takes some time. Let us take the time taken by the charges to flow is t. ये चार्ज फ्लो होने में टाइम जो लेता है वो t लेता है, ओके। सो यहाँ पर चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो कर रहा है, एंड whenever a quantity is taken with respect to time, that is called the rate of that quantity. अगर किसी क्वांटिटी को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं तब हम कहते हैं कि उस क्वांटिटी का रेट है। यहाँ पर हम इस चार्ज को, फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मींस दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मींस इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के रेट को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, राइट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is called electric current. Now, if the charge Q is flowing in the conductor within time t, then the electric current will be given as I is equal to Q upon T. This is the formula for electric current. I is equal to Q upon T. Alright, this is the formula for electric current. Now, moving ahead, watch here. We have the formula for electric current, that is I is equal to Q upon T. In this equation, if T is equal to 1, then I is equal to Q. Hence, the charge flowing per unit time is equal to the electric current. यहाँ से हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। Since I is equal to Q upon T, take this T is equal to 1. If T is equal to 1, then I is equal to Q, and we can read it to make the definition. The charge flowing per unit time is equal to the electric current. Alright, the charge flowing per unit time is equal to the electric current. Moving ahead, we have the electric current is represented by I. The unit of electric current is coulomb per second or ampere. Okay, coulomb per second. Watch here. The unit for the charge is coulomb, and the unit for the time is second. Hereby, the unit for electric current will be coulomb per second,
and this coulomb per second is also called ampere. All right. Moving ahead, we have the next thing, that is flow of electric charges in a metallic conductor. एक metallic conductor के अंदर electric charges किस तरह से flow करते हैं? Right, the flow of electric charges in a metallic conductor. Here you can see a metallic conductor. यहाँ पर एक metallic conductor है जो कि आप देख रहे हैं, and free electrons. The free electrons in this metallic conductor are moving randomly, moving here and there, in the absence of the external electric field. अगर हमने इसके क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश नहीं किया है, तब इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, here and there randomly मूव करते रहते हैं within the conductor. But when we establish an external electric field, when we connect this with positive and this negative, okay, when we establish an external electric field E from positive to negative E, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश कर देते हैं हम लोग एक एक्सटर्नल यहाँ पर, तब क्या होता है? तब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करने लगते हैं along the straight line. ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं along the straight line from negative to positive. नेगेटिव इनको पुश करता है अवे एंड पॉजिटिव ये इनको अट्रैक्ट करता है. ऑलराइट, सो दीज स्टार्ट टू मूव from negative to positive, or we can say in the direction opposite to the direction of electric field. All right, so in the presence of the external electric field, all the electrons are directed from negative to the positive. All right, so this happens when we connect a metallic conductor to the external electric field. All right, जैसे ही हम एक मेटलिक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएट करते हैं, तब क्या होता है? उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्ट हो जाते हैं स्ट्रेट लाइन की तरह. ऑलराइट, स्ट्रेट लाइन में वो डायरेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव. अदरवाइज वो इस तरह से रैंडमली मोशन करते रहेंगे अगर वहां पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश नहीं है. ऑलराइट, सो moving ahead, we will discuss about drift velocity. Okay, drift velocity. Okay, watch here. In this condition, when the electrons are moving along the straight line, in this condition, the average velocity gained by the electrons in the presence of this external electric field, this velocity is called drift velocity. इस condition में जो electrons की average velocity है, जो कि electrons ने gain की है in the presence of the external electric field, उस velocity को ही हम बोलते हैं drift velocity. That is, the average velocity gained by the electrons in the presence of external electric field is called drift velocity. Okay, ये वो average velocity है जो कि electrons ने gain की है in the presence of external field, उसी को हम कहते हैं drift velocity. Alright, now we will derive an expression for the drift velocity. अब हम drift velocity के लिए एक expression derive करेंगे. Watch here. Okay, watch here. These electrons are moving like this from negative to positive. Alright, this is negative, this is positive. Alright, and the direction of electric field is from positive to negative. It means the electrons are experiencing a kind of push in the direction opposite to the direction of electric field. Electrons एक तरह का push experience कर रहे हैं in the direction opposite to the direction of electric field. Okay, that push or the force is given as F is equal to, force is equal to E into Q, electric field into charge. Electric field is E and the charge is electron. Alright, F is equal to E into Q, so it becomes E into E. The formula for
फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू EQ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये पुश की डायरेक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है वो अपोजिट है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पुश। इट मीन्स these will be opposite to each other, so we will take a negative over here, right? So the formula for the force will be F is equal to minus E into small e, all right? And due to this force there will be an acceleration in the motion of the electrons. इस फोर्स की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में एक एक्सेलरेशन होगा और वो एक्सेलरेशन that will be provided by A is equal to F upon M. All right, put the value of F, so this would be minus EE upon M. Take this as equation 1. So we have we have the value of acceleration minus EE upon M. This is we have taken as equation 1. Now moving ahead, we will apply the first equation of motion, that is V is equal to U plus AT. All right, so let's take the initial velocity as 0 and the final velocity as the drift velocity. The acceleration is minus EE upon M into the time taken. This time taken, watch here, the time taken will be taken as the time taken between two successive collisions. When these electrons move and collide with each other, then there is some time taken between two successive collisions. जब ये electrons move करते हैं and collide करते हैं तब two successive collisions, successive means एक के बाद एक collision जो है उनके बीच में जो time taken है उसको हम लोग कहते हैं relaxation time. उसको हम कहते हैं relaxation time. The time taken between two successive collisions, दो लगातार collisions के बीच का जो time होता है उसको हम बोलते हैं relaxation time और इसको represent करते हैं tau से. Okay, this time taken between two successive collisions is represented as tau. So we have Vd is equal to 0 minus EE upon M into tau, where tau is the relaxation time or the time taken between two successive collisions. So we have the expression for the drift velocity. Vd is equal to minus EE upon M into tau. Alright, this value of A we have placed from the equation 1. ये A की value हम लोगों ने equation 1 से place की है minus EE upon M. Okay, so we have the expression for the drift velocity, that is minus EE upon M into tau. So moving ahead, we have the drift velocity in the terms of electric current. अब हम find करेंगे drift velocity को in the terms of electric current की terms में. Okay, watch here. Here is a conductor of length L and the cross sectional area A. ये conductor है जिसकी length L है और cross sectional area A है. Okay, let us consider the number of electrons per unit volume of this conductor is N. हम ये assume कर रहे हैं कि इस conductor के unit volume में number of electrons हैं N. Number of electrons per unit volume is equal to N. Okay,
ये हमने कंसीडर किया है यहाँ पर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं n। ओके, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? वॉल्यूम विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, a into l। वॉल्यूम इज इक्वल टू a into l। इसका वॉल्यूम है a into l, एरिया into लेंथ। ओके, सो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n, वॉल्यूम टोटल है al, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम। सो टोटल number of electrons is equal to n times Al। alright, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल वॉल्यूम है Al, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे n times Al, that is NaL। okay, so these are the total number of electrons that are flowing in this conductor। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं। ओके, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का? चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, Q यानी कि चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल टू Ne। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n ना होकर के NaL है, तो हम n के प्लेस पे NaL लगा देंगे। ओके, सो the charge Q is equal to number of electrons, that is NaL, into charge of electron, that is E। alright, so the charge will be Q is equal to NaL into E। number of electrons means NaL into the charge of electron, that is E। so the total charge Q is equal to NaL into E। now what here? We have Q is equal to NaL into E। okay, this is the charge that is flowing। let us take the rate of flow of this charge। ये चार्ज फ्लो है, इसका हम लोग रेट कंसीडर करते हैं। the rate of flow of charge means let us divide this by time। so this would be Q upon T is equal to NaL upon T into E। hereby you can see what here, this is Q upon T, the rate of flow of charge। this will be equal to the electric current is equal to N as it is, A as it is, and this is what? L upon T means the displacement upon time। the displacement upon time is velocity, and in this case the velocity is the drift velocity, Vd, into E। this E comes as it is, so we have the electric current I is equal to NaVd into E, the formula for electric current in the terms of drift velocity। but we have to find out the drift velocity in the terms of electric current। हमें यहाँ पर drift velocity को find करना है in the terms of electric current। so let us find it for drift velocity Vd। so this would be Vd is equal to I upon NaE, I upon NaE। this is the expression for the drift velocity in the terms of electric current। Vd is equal to I upon NaE। alright, let's move ahead। next we have the mobility of the charge carriers।
the mobility of the charge carriers. Okay, the mobility of the charge carriers or the mobility of electrons is given as mu is equal to Vd upon E. Mobility is equal to drift velocity divided by the electric field. Mobility is equal to drift velocity divided by electric field. If E is equal to 1, then mu is equal to Vd. It means drift velocity for unit electric field is equal to the mobility. The drift velocity per unit electric field is equal to the mobility. So let's read it. The drift velocity acquired by a charge carrier in a unit electric field is equal to the mobility of the charge carrier. All right. The drift velocity acquired by a charge carrier in unit electric field is equal to the mobility of the charge carrier. All right. So this is the definition of mobility of the charge carrier. Let's move ahead. We have to derive the relation between mobility and current. हमें mobility and current के बीच में एक relation establish करना है. As we know that the mobility is equal to mu is equal to Vd upon E. Okay, हमने Vd का expression derive कर रखा है in the terms of electric current, and that expression is Vd is equal to I upon NAE. Okay, from this expression we will put the value of Vd. हम ये Vd की value इसमें put कर देंगे. Then we will get mu is equal to, put the value of Vd, that is I upon NAE. Okay, this is the value of Vd. ये Vd की value हम लोगों ने put कर दी I upon NAE. Upon E denominator में एक पहले से है. Okay, so take this. All right. So the relation between mobility and current is this. All right. Mobility is equal to current upon NAEE. All right. This is the relation between the mobility and the electric current, or we can say the expression for the mobility in the terms of electric current. ये mobility का expression है in the terms of electric current. Moving ahead, we have next, that is Ohm's law. Ohm's law. What is Ohm's law? That we have learned in class 10th. ये हम class 10 में पढ़ चुके हैं. Okay, it comes here again. So, watch here. ये एक कंडक्टर वायर है जिसके क्रॉस हम लोगों ने एक यहाँ पर हमने लगाया है वोल्ट मीटर, एंड ये पैरेलल में लगाया वोल्ट मीटर, और इसके सीरीज में लगाया हम लोगों ने यहाँ पर एक अमीटर. ओके, और एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है. तब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा. राइट, जैसे ही हम यहाँ पर पोटेंशियल एस्टेब्लिश करेंगे इस कंडक्टर के अक्रॉस, तभी इसमें करंट फ्लो होने लगेगा. ओके, एंड हायर द इलेक्ट्रिक करंट, हायर विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल एस्टेब्लिश होगा. मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. Means जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है एक कंडक्टर के थ्रू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. इसके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट
उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जितनी ज़्यादा अमीटर में रीडिंग उतनी ही ज़्यादा वोल्ट मीटर में रीडिंग, या फिर जितना कम इलेक्ट्रिक करंट उतना ही कम पोटेंशियल डिफरेंस। जितनी कम रीडिंग इलेक्ट्रिक इस एमीटर में उतनी ही कम रीडिंग इस वोल्ट मीटर में। एंड इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन provided that the physical conditions like temperature, pressure and volume remain constant. ये तभी पॉसिबल है जबकि फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ये कांस्टेंट रहें, तभी इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज according to Ohm's law, under these conditions, under these constant physical conditions, the electric current is directly proportional to the potential difference, or the potential difference is directly proportional to the electric current. All right, vice versa. या तो हम कहें कि इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। राइट, नाउ दिस इज V proportional I. Whenever we remove the sign of proportionality, we take a constant. जब कभी भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं, हम एक कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, और यहाँ पर वो कांस्टेंट है, this would be V is equal to I into R, or we can write it like R into I. Okay, where R is a constant. यहाँ पे हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करके एक कांस्टेंट कंसीडर किया है, वो कांस्टेंट है R. Alright, V is equal to RI और V is equal to IR. What is this R? ये R क्या है? ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो क्वांटिटी क्या है, इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। Alright, so watch here. The current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. That is I proportional V, or V proportional I. Remove the sign of proportionality, take the constant is R. V is equal to Ri. It is possible only when the temperature, pressure and volume, these physical conditions remain constant. So we have the formula for potential difference V is equal to IR. This is the formula for the potential difference V is equal to IR according to Ohm's law. Now what is this R? ये R क्या है? ये R constant है, proportionality constant है, लेकिन ये quantity को represent कर रहा है। Okay, watch here. Where R is a constant called the resistance of the conductor. ये R इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है? The factor which opposes the current flowing through a conductor is called the resistance. इस कंडक्टर के अंदर एक ऐसा फैक्टर है जो कि इसके थ्रू करंट फ्लो को रेजिस्ट करता है, उस फैक्टर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ऑलराइट, ये वो फैक्टर है जो कि अपोज करता है करंट को जो कि फ्लो कर रहा है थ्रू द कंडक्टर, उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। Right? The factor which opposes the current flowing through a conductor is called resistance. It is represented by R. All right. Watch here. As we have V is equal to IR. From here, the value of R will be V upon I. V is equal to IR, ये फॉर्मूला हमारे पास है। यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी V upon I. R is equal to V upon I. All right, and this R is called resistance or electrical resistance. It is called electrical resistance.
Alright, the resistance is represented by R. Alright, it is represented by R. Its unit is volt per ampere. The unit for the potential difference is volt, and the unit for the current is ampere. That's why the unit for the resistance will be volt per ampere, volt upon ampere. And this volt per ampere or volt upon ampere is also called ohm, and it is represented by the symbol ohm on the basis of the name of the scientist, ohm. Alright, the unit of the resistance is volt per ampere or ohm. So, moving ahead, we have VI graph. Okay, watch here. यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है. ओके, ये ओमिक कंडक्टर के लिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, उन फिजिकल कंडीशंस यानी टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम के कांस्टेंट रहने की कंडीशन में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है ओमिक कंडक्टर के लिए. ओमिक कंडक्टर मींस ऐसे कंडक्टर्स जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं हम ओमिक कंडक्टर्स. राइट, सो वी अचीव a straight line graph between V and I, right, for the ohmic conductors. All right, in this condition, the graph between the voltage and current is a straight line. The resistance from this graph will be given as, इस ग्राफ से अगर हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो उसको हम प्रोवाइड करेंगे इस तरह से. We know that R is equal to V upon I, but in this case we will take the section. हमें पता है कि R क्या होता है, V upon I. यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे the difference of V and the difference of I. So this would be R is equal to delta V upon delta I. Okay, this gap or this section upon this gap or this section. All right, delta V upon delta I. This will be given as the value or the expression for the resistance with the help of this graph. Right, this is the expression for the resistance. R is equal to delta V upon delta I. Now, next we have the linear and non-linear VI graphs. Okay, watch here. This we have drawn a VI graph between the potential difference and the electric current, which is linear, which is a straight line. Okay, this is for an ohmic conductor. All right, this is for an ohmic conductor. ये एक ओमिक कंडक्टर के लिए यहाँ पर एक VI ग्राफ प्लॉट है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट विच इज लीनियर. अगर हम इस VI ग्राफ को प्लॉट करें एक नॉन ओमिक कंडक्टर या फिर एक पीएन जंक्शन डायोड के लिए, ये एक पीएन जंक्शन डायोड के लिए VI ग्राफ प्लॉट है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट. द ग्राफ प्लॉट दैट इज VI ग्राफ, this is for a PN junction diode. All right, for a PN junction diode. PN junction diode को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में और ज़्यादा पढ़ेंगे. Okay, so for the PN junction diode, the VI graph is not linear. It is like this in forward bias and in reverse bias condition. यहाँ पर एक पीएन जंक्शन के लिए जो VI ग्राफ प्लॉट है वो लीनियर नहीं है बल्कि नॉन लीनियर है. ओके, जबकि एक ओमिक कंडक्टर के लिए ये जो VI ग्राफ है वो
linear है. So these are called linear and non-linear VI graphs. These are for the different materials. This is for an ohmic conductor, and this is for a P injection diode. All right. So these are linear and non-linear, linear and non-linear VI graphs. All right. That's all for now. See you again. Thank you.